Hello everyone. So I'm Sudipta, welcoming you all to Vedang Teaching powered by Vedang Institute of Technology. So wishing you all a happy Nuakhai. Okay. So Nuakhai din ro onek shubhecha. Thank you Chaitanya. Thank you so much. रहीजा क्लास को टिके शेयर करिबा. जीवन ग्रुप रे शेयर कलु क्लास को. क्लास टा शेयर करे ग्रुप रे. टीचिंग चेक कर जदी हेई नि करिवो. For watching started. Okay. So hello everyone. Good evening, Vivek. Happy Nuakhai. Nuakhai Juhar, Nuakhai Juhar. Okay. So chalo start kariba class. Before that, ठीक है join हुआ. Okay guys, so we'll start the class. So before that, let me verify. Okay, audio video clear, right? Start करिबा. The first question easy अछि. आज रो क्वेश्चंस बहुत इजी है जे क्वेश्चन जानि छी तमरा प्लांट फिजियोलॉजी रे. बिफोर दैट तम मानु कहू छी आमार पवित्र गणेश पूजा जोटा कि काली थिला जाई सारी छी. आज नुआखाई तो एई दीटा फेस्टिवल आमर सेलिब्रेट करिबा लागि आपण मानक पई गोटे ऑफर आमर आस्थिला 2499 रे महापैक रो प्राइस ड्रॉप हे की 2499 ही जाइतला जोटा कि आपण माने 3499 रे आगुरु परचेज करूथली, राइट? सो यार वैलिडिटी 1.5 ईयर अछि and 26 थिला 27 थिला and आज गोटे दिन रही 28 लेफ्ट. सो आपण माने जे भी इंटरेस्टेड अछंती बैच परचेज करिबा लागि जल्दी जल्दी महापैक को एनरोल करि नियन. दैट्स इट. ओके, सो स्टार्ट करिबा फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. रेडी स्टेडी गो. किशोर नुआखाई जुहार. नुआखाई जुहार गाइस. ओ मिठा क्लास मजरे मिठा आगे से बैग थियो देखन. Okay, so the process by which green plants prepare their food is called. The process
The process by which green plants prepare their food is called. आपण माने जानी चंती respiration process कौन ना the process of breaking down the glucose into energy आमे ताकू कौन कहूचे ना मैम respiration कहूचे ताकू राइट कोथरे ना जो प्रोसेस रे हमर कौन ग्लूकोज एनर्जी रे कन्वर्ट होची कौन ना मैम ग्लूकोज कन्वर्ट होची कोथरे ना मैम एनर्जी रे एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट ना मैम एटीपी ताकू आमे कौन कहूचे ना मैम रेस्पिरेशन ओके बट हियर कौन हबो ना मैम ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस ही हबो काहे की फोटोसिंथेसिस बिकॉज प्लांट मिक्स करे लाइक प्लांट तैयारी करे तार फूड को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहि पारी बाकी द प्लांट मेक्स ग्लूकोज यूजिंग व्हाट ना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आउ कौन रहिबो ना मैम वाटर भी रुहे प्लस कौन रहिबो ना मैम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आको आमे कौन कहूचे ना मैम फोटोसिंथेसिस बोली कहूचे क्लियर सो दैट एग्जांपल आपण माने नै परिबे द ग्रीन लीव्स ऑफ द व्हीट कार व्हीट रो ग्रीन लीव्स आसे जो थरे की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे से तार खाद्य तयारी करे एंड व्हीट फॉर्मेट करे राइट नुआ खाई जुहार गाय जुहार ओके चलो नेक्स्ट मते कुआ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस टा कोन ना नथिंग बट द लॉस ऑफ व्हाट लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन कोन ना मैम दिस इज लॉस ऑफ water vapor through stomata that is what na transpiration in the same way mate kuha ma'am germination कौन ना मते सेम वे रे कुह जर्मिनेशन कोटा को हमें कहूचे ना द स्प्राउटिंग ऑफ ए सीड कोन जते बेले जे कोन से सीड रो आपण माने मने पकांतु कोठी की ना गजा मुग गजा बुट जते बेले हमें खाउचे सकाळू राती रे हमें भिजे की रखिले सकाळू को कोन होची पानी रो काढी की जदी खाली रे रखि देबा वाटर ऑलरेडी एब्जॉर्ब करि जाइथिबो देन कोन करबो ना सेथरु से गोटे रूट बाहर करूची तो स्प्राउटिंग हमें कहूचे जर्मिनेशन माने कोन ना स्प्राउटिंग याकू रिलेट करि परिबो दिस इज व्हाट ना स्प्राउटिंग ऑफ सीड ओके वेरी गुड चलो एतिके बुझी पारलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा चलो नेक्स्ट मते कहो द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इज मते कहो द ग्रीन पिगमेंट जोटा कि हमें कोन कहूचे ना क्लोरोप्लास्ट कहूचे कहि भी देली आंसर की अच्छा कहो सो क्लोरोप्लास्ट हला या फिर ताको हमें कोन कहूचे ना मैम क्लोरोफिल कहूचे कोन हबो दैट इज क्लोरो पड़ गला यस क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट थाए जोथि पई कि हमर कोन ना लीफ रो कलर मैम ग्रीन कलर थाए बट जदि पचरा गला मैम कैरोटीन कौन ना कैरोटीन हुए जोटा कि ऑरेंज पिगमेंट जदि ऑरेंज पिगमेंट आपण माने देखिबे कौन सी प्लांट रे अछि एंड तार लीफ रो कलर कौन ना आपण माने देखिथिबे फॉरेन रे जो फॉरेन कंट्री रे हमर वेराइटीज ऑफ शोकेस प्लांट्स माने अछंती बहुत ही बड़ बड़ प्लांट अछंती जो मानकर कलर आसी ऑरेंज कलर दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन पिगमेंट इन द लीफ दैट इज एब्जॉर्ब्स ब्लू वायोलेट लाइट फ्रॉम द कोना टोटल लाइट रू हमर ब्लू एंड वायोलेट कलर लाइट एब्जॉर्ब करंती दैट्स व्हाई तार कलर फे कोना ना ऑरेंज कलर सेमिति हम जदि पछा हला जांथोफिल हमें कोन कहबा एटा जदि ऑरेंज पिगमेंट हला दिस वन इज द येलो पिगमेंट दिस वन इज द येलो पिगमेंट इज that clear very good so yellow pigment हमर कोन करे ना that protects the chlorophyll from excess light जदि excess light हैला photosynthesis केते हबो excess हेई परिबो but excess हेई गले हमर मन जानिथिबे too much anything is bad so excess जदि हबो ताहाले भी हमर food processor रे कोन तार इफेक्ट पड़िबो that's why हमें कोन कहबा ना xanthophyll भी प्रेजेंट रहउची जोथरे हमर कोन हेल्प करूची ताकू टिके डिक्रीज करेबारे ओके सेम जदि आपण मानु क्लोरोफिल जानले दैट इज द ग्रीन पिगमेंट एब्जॉर्ब कोन करिवो ना रेड एंड ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करिवो बट ए जो एंथोसियानिन रहिला ताकू हमें कोन कहउची ना दिस इज एंड ब्लू पिगमेंट जो गछर लीफ माने आपण माने देखिबे ना रेड कलर हेइथिबो या फिर ब्लू कलर हेइथिबो दैट इज द एंथोसियानिन पिगमेंट इज प्रेजेंट ऑन द लीफ दैट्स व्हाई द कलर इज रेड और ब्लू जदि ऑरेंज आसिला कैरोटीन ऑरेंज कथा माने पके दबा का कथा कैरोट रो कलर एमिति रे तो ऑरेंज आसे सो कैरोटीन पिगमेंट विथ ऑरेंज जांथोफिल को आपण माने रिलेट करी मन रखंतु कोन येलो कलर सहित बाकी क्लोरोफिल रहिला कोन कॉमन वर्ड दैट इज प्रेजेंट इन द लीफ ग्रीन प्लांट्स ओके नेक्स्ट देखिबा
नेक्स्ट मते को व्हिच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अच्छा फोटोसिंथेसिस रे आपण मानु कोन कहितली ना मैम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन हुए ना हमर रिक्वायर हुए कौन हुए ना टेकन इन द ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इज रिक्वायर्ड बट एज अ बाय प्रोडक्ट कौन बाहरी जाए टेल मी द राइट आंसर एज अ बाय प्रोडक्ट कौन बाहरी जाए ना मैम ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस नो विवेक कौन हबो ना कार्बन डाइऑक्साइड हमर रिक्वायर हुए एठी पचाचा रिलीज हुए जोडा रिक्वायर हुए दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट जदी फोटोसिंथेसिस रे कोडा रिलीज हो जाय हमें कहिबा दैट इज ऑक्सीजन वेरी गुड चलो तो नाइट्रोजन दैट इज अब्जॉर्ब्ड इन द आयोनिक फॉर्म हमें NO3 कथा कहिबा NH4 कथा कहिबा सेही टाइम रे ताको रिक्वायर हुए नेक्स्ट चलो मते कुह द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ताको हमें कोन कहूचे द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ऑब्वियसली आपण माने जानिथिबे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट व्हाट इज डीएनए ना जदी जेनेटिक मटेरियल पचारिला कोन पचारला ना जेनेटिक मटेरियल जदी पचारिला ताहले हमें कोन कहबा ना दैट इज डीएनए जदी एटीपी दैट इज द स्टोर्स ATP stores and transfers the energy तार example कौन नहीं परिबो ना the muscle contraction uses the ATP जते बेले हमर muscle contraction हुए that use कौन करे ना मैम ATP यूज करे RNA कौन ना that involved in protein synthesis RNA कोथरे इन्वॉल्व हुए ना मैम प्रोटीन सिंथेसिस रे ये यूज रासे देन मते कहलो NADPH कौन ना that is the electron carrier in photosynthesis this is photosynthesis process रे electron को के carry करे this is the electron carrier this is what electron carrier so NADPH is related to the electron carrier okay चलो next मते कुआ the opening and closing of stomata is regulated by OAVS पाई मैथ के पढ़ेबो ऑब्वियसली जोगेश सर पढ़ेबे आ के पढ़ेबो त मानकर मैथ माने वेदांग क्लासेस मैथ माने जोगेश सर ओके मैम एटा न्यू चैनल की आज्ञा आलोक बाबू एटा न्यू चैनल ओके तो मते कोआ the opening and closing of stomata is regulated by the opening होची and closing होची कोन ना हमर stomatal opening closing आपण माने सुनिथिबे तो जो opening हैला stomata this is कोन ना जते बेले हमर guard cells fasting के जाना opening होची कोन ना opening of stomata that means the guard cells absorb the water जते बेले water को absorb करिबा ना guard cells माने like become torcid हे जिवो that is they पुनी again कोन हबो ना swell off हे जिवो and bend हबो कोन ना outward को bend हे जिवो suppose this is the stomatal opening this is what ना stomatal opening तो एमाने कोन हबो ना पूरा एरा कोन हबो ना मैम पूरा टर्जिड हे जिवो सो ये कोन हबो ना आउटवर्ड को बेंड करिवो अगेन हमें कहि परिबा रिएक्शन हबो how does it happen ना light activates the photosynthesis due to the presence of light eta hei pare so light कोन करिवो ना photosynthesis को activate करिवो in the guard cells and thus production start हबो कहार ना मैम ATP रो बुझी पारुछ then ATP drives the active transport of the potassium ions into the guard cells potassium ion को कोन ना guard cell भीतर को से नै के आसीबो that's why हम कहिबा toxicity start हे छिबो clear then मते को closing of stomata कोन हबो ना when guard cells lose water जदि receive करूची water absorb करूची water then कोन होची ना मैम opening होची जते बेले lose हे जिवो water release हे जिवो then कोन हबो ना जते बेले हमर कोन होतुला ना मैम टर्जिड हे जाउथला इन दैट कंडीशन एठी कोन हबो ना मैम फ्लैसिड हबो सो दीटा वर्ड मने रखो वन इज टर्जिड वन इज फ्लैसिड तो ए फ्लैसिड कोन ना क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा एंड ए टर्जिड कोन ना मैम दिस इज ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा क्लियर अच्छा हो देखिबो एक्चुअली सर टिके नुआ खाई पे घर को जाइचंदी आसिला पर आपण मानकर 1 तारिख टू कंटीन्यूअसली क्लास हला तो मते कुआ the opening and closing of stomata is regulated the question ru bahar को पळै थिले so this is depend upon the guard cell so guard cell ही हमर कोन करे ना opening हुए and closing हुए right very good चलो next
ए फ्लोएम सेल कोथरे फ्लोएम सेल रा यूज कोन हबो टिके मने पके देला ना मैम फ्लोएम सेल्स हमर यूज हुए कोथरे ना ट्रांसपोर्ट करे सुगर को कोन ना ट्रांसपोर्ट करे सुगर को थ्रू द फ्लोएम सेल क्लियर मते को रूट हेयर रो काम कोन इन द सेम वे मते को रूट हेयर रो कोन काम ना से एब्जॉर्ब करिवो वाटर एंड मिनरल्स को कोन ना रूट हेयर absorbs water and minerals obviously कोठु करिवो ना through the soil from the soil right then देखो मते को जदी ट्राइकोम्स रो काम कोन को मते ना ट्राइकोम्स भी सेटा हमर सेम हेयर लाइक स्ट्रक्चर तार भी माने आउटग्रोथ ता गोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ थाए कोथि पई ना फॉर प्रोटेक्शन कोथि पई ना फॉर द प्रोटेक्शन हमें कहि परिबे एग्जांपल आपण माने नै परिबे कॉटन फाइबर्स रो एग्जांपल आपण माने नै परिबे हैला क्लियर इज दैट क्लियर चलो नेक्स्ट मते को Which process helps in the upward movement of water in plants? अच्छा को process रे plant रा movement like water रा movement plant रे upward ही था that means soil से कौन ना throughout the body से water को absorb करे the process name is what respiration the हबनी that produces the energy respiration हबनी so कौन हबो ना मैम transpiration pull what is that is transpiration pull no not food transpiration pull फूड कोठे ऑप्शन अछि फूड कोठे ऑप्शन अछि यस ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन पूल जो हमें कहि परिबा नेगेटिव प्रेशर पूल्स वाटर अपवर्ड एग्जांपल नै परिबा आपण टॉल ट्रीज लाइक हमर कोन ना जेते यूकालिप्टस अछंती तो ताको आपण माने एग्जांपल नै परिबे बट जेते भी बड़ बड़ गछ हेले समस्त हमर कोन ना वाटर को थ्रू द ट्रांसपिरेशन पूल ऊपर पर्यंत नियंती एंड थ्रू आउट द बॉडी से माने वाटर सर्कुलेट करि पारंती एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑलरेडी आपण माने जानि सन्ती डिफ्यूजन कोन ना दिस इज द पैसिव मूवमेंट व्हाट इज दिस ना दिस इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ व्हाट ना ऑफ द molecules okay that is not main the mechanism here clear next chala mate kuwa can plants open their stomata ए जो कैन प्लांट्स हमर माने अछंती से माने तांकर स्टोमाटा ओपन करंती को टाइम रे करंती ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यूरिंग द नाइट टाइम और बोथ डे एंड नाइट और नोन ऑफ टाइप ऑफ कोन हबो कुआ ओन सॉरी ओनली एट डॉन तो हबनी आइदर तमे नाइट को चूज करिवो नहले डे को चूज करिवो आइदर नाइट को चूज करिवो नहले डे को चूज करिवो 7 नंबर को आसा विवेक नेक्स्ट को आसा 7 को आसा सो कैंप प्लांट्स माने कोन ना ड्यूरिंग द डे दे आर कोन ना ट्रू फॉर द नॉर्मल हमें कहि परिबा नॉर्मल प्लांट्स माने से माने कोन ना ड्यूरिंग द डे प्लांट्स बट कैंप प्लांट्स माने कर कोन रहिची से माने कर खासियत कोन ना दे आर वेरी लाइक दे हैव टू कंजर्व द वाटर एग्जांपल आपण माने कोन नै परिबे कैंप प्लांट्स माने कोन आपण कहउसंती ना ऑब्वियसली नाइट टाइम रे हेबे बट कोडा बे एग्जांपल नै परिबे ना कैक्टस ओके आ कोन नै परिबा जेते सब कंटा जतियो फॉर एग्जांपल आपण माने पाइनएप्पल को भी नै परिबे कागु ना पाइनएप्पल को भी नै परिबे राइट सो कैक्टस हेला पाइनएप्पल हेला जे माने कोन ना राती टाइम रे तांकर माने रेस्पिरेशन टिके जोर से करंती एंड हमर कोन वाटर को एब्जॉर्ब करिक रखंती तांको भितरे बिकॉज़ डे टाइम रे पुनी वाटर लॉस हुए पुनी इवापोरेशन प्रोसेस चले सो एई सब जिंस को बैलेंस करिबा लागि नाइट टाइम रे से स्टोर करिक रखंती नेक्स्ट मते को द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन the dark reaction of photosynthesis takes place where the dark reaction of photosynthesis takes place in grana to hoboni grana kono na this is the site of light reaction grana is what na this is the site of light reaction पचारि कोन ना हमर डार्क रिएक्शन पचारि डार्क रिएक्शन कोन हबो ना ऑब्वियसली मैम कोन ना हमर स्ट्रोमा ही हबो ग्रानार ऑपोजिट स्ट्रोमा सब बेले मन रखि था हैला ग्रानार ऑपोजिट इज ऑलवेज स्ट्रोमा दैट इज द साइट ऑफ कोन केल्विन साइकिल जदी केल्विन साइकिल रे कोटा यूज हुए आपण माने मन रखिबे केल्विन साइकिल रे मन रखिबे दैट इज द स्ट्रोमा एग्जांपल आपण माने नै परिबे खीरीपत्र नो विवेक खीरीपत्र हमर नॉर्मल प्लांट रे पळेबा तो मते को द साइट ऑफ केल्विन साइकिल रो एग्जांपल आपण माने नै परिबे सुगर सिंथेसिस इन द मेज
कौन ना सुगर सिंथेसिस प्रोसेस को आपण माने नहीं पारिबे सुगर सिंथेसिस को आपण माने स्ट्रोमा रा एग्जांपल नहीं पारिबे क्लियर सो मते कहंतु माइटोकॉन्ड्रिया कौन ना दैट दिस इज व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया इज लाइक हमर कौन responsible for the कौन ना हमर मैम respiration so this is mitochondria known as the site of respiration the site of respiration अच्छा मते कहलो साइटोप्लाज्म कौन गाइस what is साइटोप्लाज्म एक्जाक्टली ना द रेस्पिरेशन जोठी हुए जो प्रोसेस तो नहीं जो जगह रे हमर हुए दैट इज ऑब्वियसली नॉट द डार्क रिएक्शन दैट हमर लाइट रिएक्शन बट द कंडीशन हमें कहबा सेल भीतर कहबा रेस्पिरेशन कोठी हुए सेल भीतर हुए सो सेल भीतर जोटा फ्लोटिंग कंडीशन हमर न्यूक्लियस रहिला न्यूक्लियस रहिला एटा सब कोठी रहिला ना मैम साइटोप्लाज्म रे सो दिस इज द फ्लोटिंग कंडीशन दैट लिक्विड हमें ताको कोन कहचे ना मैम साइटोप्लाज्म बोली कहचे इज दैट क्लियर नेक्स्ट इबा वेरी गुड चलो मते कह द लाइट रिएक्शन अकर्स इन तमानु कहितली जदी डार्क रिएक्शन कोन हैला स्ट्रोमा हैला लाइट रिएक्शन तार ऑपोजिट हबो दैट इज ग्राना दैट कंटेन्स द थाइलाकॉइड्स कोन ना थाइडाकॉइन्स थाइलाकॉइड्स कंटेन करूची where light energy is captured ए थाइलाकॉइड्स कोन ना मैम थाइलाकॉइड्स जोठी प्रेजेंट थाए से लाइट एनर्जी को इजीली कैप्चर करि पारे क्लियर बहुत सारा आउरी कंटेंट अच्छी तमन को कवर ऑफ करबा लगी बट स्टिल तमने एमसीक्यूज पैटर्न ने बहुत सारा कवर करि पारिबनी बॉटनी रो ता पई तम मन को एप्लिकेशन क्लास नेबा को ही पड़िबो थ्योरी क्लास को आसीबा को ही पड़िबो एंड आपण मन को कहिबी कि ऑलरेडी सीबीजेड रो क्लास पीसीएम रो क्लास हमर एप्लिकेशन ने स्टार्ट हे सरलानी तो आपण माने टाइमली टिके जॉइन करंतु डेली सकाळ 9:30 रे केबे ना डेली सकाळ 9:30 रे आपनकर एप्लिकेशन क्लास होची सीबीजेड एंड सीबीजेड पिलांक पई सो दया करिके टिके जॉइन हुंतु बिकॉज आपण मानकर कोर्स कवर हे जिवो बैक आपण खाली रिकॉर्डिंग देखिबा सहित समान अदरवाइज एप्लिकेशन परचेज करिके किछि भी लाभ नाही क्लियर अरे क्या हुआ ओके तो मते को चलो नेक्स्ट मते को नेक्स्ट कोन अछि ना ग्राना नेक्स्ट मते को द मेन फंक्शन ऑफ जाइलेम इज जाइलेम रा मेन फंक्शन कोन टिके कहिलो जाइलेम रा नुआ खाई पई केही क्लास करू नाहंती अच्छा न कले निजर ही हैरान हबो नुआ खाई रे मां समले भी आसी तुमको तो हेल्प करि परिबे ना मां समले भी कहिसंती मते गोटे दिन मते हाफ डे पूजा करी के जाओ पुनी हाफ डे सेकंड हाफ रे जाई बसी पाठ कर राइट कुआ द मेन फंक्शन ऑफ द जाइलेम आमे कोन कहूचे आपण मानु कोन कहितली मैम जते बेले फ्लोएम आसीबो फ्लोएम दैट मीन्स पीएच फॉर स्टार्ट हबो देन आपण माने रिलेट कर देबे फूड को देन रहिला के ना जाइलेम ताकू आपण माने कोठी ना वाटर सहित रिलेट करिवे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हे गले कोन हबो ना मैम फ्लोएम हबो तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हेले जाइलेम को रिलेट करिवो क्लियर वेरी गुड चलो स्टोरेज ऑफ फूड हेले कोन कहि पारे को ना पैरेनकाइमा स्टोरेज ऑफ फूड कोठी हुए ना मैम प्लांट रो पैरेनकाइमा रे एटा प्रेजेंट रुहे the parenchyma then photosynthesis आपण माने मित्र जानचंदी the kitchen that is the leaf right चलो next so the main function of phloem is main function कोन रहिबो इवनिंग रे भेट घाट हुंती अच्छा इवनिंग रे भेट घाट हुंती तो राति राजी क्लास बंद कर देबा त माने नुआ खाई भेट घाट करिवो हां चलो सको तो मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज बट स्टिल बुझी पाछ त मान का सेंटीमेंट बुझी पारे अच्छा डांस प्रोग्राम भी थाए अरे वाह अरे केटी के वीडियो कॉल करके देखा केमिति हुए एग्जैक्टली राइट ना ना हमर जोगेश सर जाइछंदी ना देखिबा पई सो जोगेश सर को फोन करके वीडियो कॉल करके हमें देखिया पड़िबो एग्जैक्टली हुए कोन सेठी हमको तो कई छाड़ा डाकू नांती वेस्टर्न ओडिसा लोको क्या मैम आसंतु टी देखियो बोली बट फॉर श्योर केबे ओटे ऊपर पड़ के जिबी देखिबा लागि एक्चुअली हुए केमिति छोट बेले सुनी छी नुआ खाई एक्चुअली हुए केमिति दाल खाई मैम दाल खाईटा पुनी कोन दाल खाई नुआ खाई अलगा अलगा दाल खाई जोटा नुआ खाई सेटा नहीं
आउ गोटे कौन थाए नुआ खाई जेमती सेमती आउ गोटे कौन थाए ना तुम मानकर लाइक कौन थाए अगस्त 1 को कौन सेलिब्रेट करा सेटा गोटे सेलिब्रेशन डे थाए ना जेमती आमे सेलिब्रेट करू तमे आमे जेमती उत्कल दिवस समस्त मिसी सेलिब्रेट करछु बट से माने संबलपुरी दिवस राइट संबलपुरी दिवस बोधे ताकू सेलिब्रेट करो अगस्त 1 रे अच्छा डालखाई डांस सेटा करो अच्छा सेटा तो मैं जानची डालखाई डांस तो ए नुआ खाई रे डालखाई डांस टाकू तुम माने करो या तो हाड़ खाई तो ओडिशा सारा होची एटा कार्तिक मास परे पड़े मु जानची सेटा भलो भाबरे तो मते डालखाई विषय रे कुआ तो नुआ खाई रे जो डांस टा हुए सेटा को हमें डालखाई कहूचे राइट तो तमन को पछाड़े किसी लाभ ना लाइक नाइट क्लास रे पचारे पिला कहिबे तो मते कहता मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम फ्लोएम आसिले माने कोन कहबो ना मैम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कोन हो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड नेक्स्ट चलो द प्रेशर दैट डेवलप्स इन रूट ड्यू टू द वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छा वाटर एब्जॉर्प्शन टाइम रे गोटे प्रेशर हमर रूट रे पड़े सेटा को हमें कोन कहूचे कहिलो ऑस्मोटिक प्रेशर भूल से कहबनी रूट रे होची माने कोन ना मैम रूट प्रेशर दैट द फोर्सेस ऑफ वाटर इनटू द जाइलेम जेते बेले के हमर कोन कहि परिबा एक्सुडेशन कोन हुए ना मैम एक्सुडेशन और एक्सुडेशन आपण कहि परिबे एक्सुडेशन इन द कॉर्ड स्टेम आपण माने जेते बेले गोटे गछर डाळ को काटुथबे देखुथबे ना सेटु टिके टिके पानी पानी भला बाहरुची जहा भी हेले लिक्विड लिक्विड बाहरिबो राइट पुष्पुनी ये कोन गोटे कहलेनी पुष्पुनमी पुष्पुनमी बोधे पौष मास रे हुए राइट पुष्पुन पुष्पुन पुष्पुनी आर भारी डिफिकल्ट वर्ड गुडा तो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं रूट प्रेशर कौन हम ना रूट प्रेशर विल बी द राइट आंसर हैला चलो मते सार माने कहिथिले संबलपुरी लाइन दीटा घुसिकी आज पिलांका आगे कहबा लगी संबलपुर माने संबलपुरी लैंग्वेज रे बट गाइस वेरी ऑनेस्टली कहबी तो माने हीरालाल को भी पचारि परिबो बहुत ट्राई कली बट से हेलानी मु कोन करि परबी फिर भी ट्राई करबी राती क्लास रे तमनु कहबा लगी स्टिल ट्राई करबी राती क्लास रे तमनु कहबा लगी हैला दरिद्र सीमा रेखा तले अछि सर काई देखु सर 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 मते कहतु नुआ खाई रे जो डांस फॉर्म टा हुए सेटा को डाल खाई कहंती और यू डोंट हैव एनी आईडिया डाल खाईटा मु भी जानची संबलपुरी डांस बट एटा नुआ खाई दिन ही सेटा को सेटा केबे भी कर परिबो माने फेमस एंती ओडिसी डांस सेटा ओडिसीटा होची एटा क्लासिकल बट सेटा नै डांस बडा कर परिबो डाल खाई नुआ खाई संग तो ठीक है श्रीराम पटनायक एबे कुहंतु कौन कहबी गोटे गीत थिला ना डाल खाई रे लाइक मु एति के जानि छी तापर हमर लाइन बने नाही कोन छोट बेले मु सुनिथिली डाल खाई को नै की गीतडा ओके सो मते कुआ रूट प्रेशर हैला कोन ना मैम जो टाइम रे हमें कहिबा द प्रेशर दैट डेवलप्स इन द रूट ड्यू टू द वाटर एब्जॉर्प्शन दैट इज व्हाट रूट प्रेशर सो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें कहा को कहूचे ना मैम द प्रेशर फॉर द ऑस्मोसिस जोड़ा ऑस्मोसिस पाई जो प्रेशर टा होची ऑस्मोसिस पाई जो प्रेशर होची ताको हमें कोन कहूचे ऑस्मोटिक प्रेशर सेमिति टॉर्चर हमर जोटा कोन टॉर्गर प्रेशर कोडा कहूचे ना द प्रेशर ऑफ सेल कंटेंट्स the pressure of cell contains against the cell wall against जो pressure टा contain हबो that is example आपण माने परिबे the wilted versus the fresh leaves clear जेमिति कोन जदी गछटा सपोज गोटे पत्र सुखी जाइथिबो राइट गोटे आपण माने सागर एग्जांपल नियति खरा बेले देखिथुबो साग गुरा बहुत जल्दी सुखी जाए पुणी ताको आनी पानी रे आपण पके दे पुणी सागुडा फ्रेश हे जायनी केमिति हुई ना तार स्टेम आकार माने स्टेम भीतर देकी पुणी कोन लीफ पर्यंत वाटर टा पहुंचे सो हमें कहि परिबा द जाइलम टिश्यू इज रिस्पांसिबल फॉर दैट सो द प्रेशर दैट इज द टर्चर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोन ना प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होउची ताको हमें कोन कहूचे ना दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइट चलो नेक्स्ट मते कुह C4 plants minimize photo respiration by fixing carbon dioxide in the what the C4 plants कथा पचरला guys C4 plants minimize photo respiration
by fixing carbon dioxide in the bundle sheath cells, guard cells, spongy, mesophyll or stomata. What will be the right answer? Obviously ma'am kon habo na bundle sheath cell. Kon habo bundle sheath cells. Clear? So bundle sheath cell को हमें कोथरे कहूचे ना, that is the Kranz anatomy. कौन कहूचे ना, this is done by the scientist Kranz and that according to him एटा हमर कौन हैला ना Kranz anatomy. Okay, Kranz anatomy हैला. Example आपण माने मेज रो नहीं परिबे. आई झुंटिया कौन? झुंटिया माने झुंटिया, अरे सेटा झुंटिया पादरे पिंधंती जो गोड़ मुदी ताको झुंटिया कहंती हैला. ओके चलो, तो स्पंजी मेसोफिल कौन हबो ना, द प्रेजेंट हमर कोठी थाए C4 प्लांट रे नुवा. ई स्पंजी मेसोफिल ता मैम C3 प्लांट्स रे प्रेजेंट थाए. सेम जदि स्टोमाटा में देखिबा एंट्री पॉइंट ही हमर कोन ना स्टोमाटा, राइट. चलो नेक्स्ट मते को व्हिच इज द फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ carbon 3 cycle, that is the Kelvin cycle. Kelvin cycle लो मते को फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमें कहा को कहूचे. ऑब्वियसली मैम PGA को कहिबा काहेकि ना दिस इज द फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड. PGA इज कोन ना, PGA इज द फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड. क्लियर? दाल खाई ऑल फिश. हाँ हाँ बुझिली बुझीगली विवेक, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर. डाल खाई आ नुआ खाई हैला. सो पाइरुवेट को हमें कौन कहूचे ना, द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस रे जो प्रोडक्ट हमर बाहरी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे जो प्रोडक्ट रिलीज हुए ताको हमें कौन कहूचे, दैट इज द पाइरुवेट. सेम जदि मैलेट रे हमें कहिबा दैट इज द इंटरमीडिएट इन द C4 साइकिल. C4 साइकिल रो इंटरमीडिएट फेज रे हमर कोन आसे ना मैलेट यूज हुए. द OAA को हमें कौन कहूचे ना मैम, दैट इज द ऑक्सालोएसिडिक एसिड. दैट इज द फास्ट प्रोडक्ट इन द C4 प्लांट्स. एटी C3 प्लांट्स रो फास्ट प्रोडक्ट कोन ना PGA. जदि C4 प्लांट्स रो फास्ट प्रोडक्ट पचारिला दैट इज व्हाट ऑक्सालोएसिडिक एसिड. क्लियर? चलो नेक्स्ट मते को द फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल. एबे कहली द फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल कहा को कंसीडर करिवो, द फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल. PGA नाही एबे ही तो कहली PGA हेले C3 सहित रिलेट करिवो. PGA हेले कोन C3 सहित रिलेट करिवो. सो ऑक्सालोएसिटिक एसिड दैट इज एबे जस्ट कहली ऑक्सालोएसिटिक एसिड दैट द मेसोफिल सेल formed in the mesophyll cell and this is example आपण माने सुगर केन रो नै परिबे. दैट इज द ऑक्सालोएसिटिक एसिड C4 प्लांट रो फर्स्ट फेज फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट बोली हम ताको कंसीडर करूछ. ओके यस चलो. Pyruvate is a byproduct जोटा later release हुए. Malate this is also temporary storage molecule. Okay चलो next. मते को the site of respiration in cells is, the site of respiration in cells is what? The site where the respiration of the cell is occurred, that is known as what? That is the ribosome, mitochondria, chloroplast or nucleus. What will be the right answer? राइबोसोम कौन, दैट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. जो थे हमरा कौन हुए ना मैम ट्रांसलेशन प्रोसेस हुए, रेस्पिरेशन हुए नहीं. कौन हमें प्रोटीन सिंथेसिस रिलेट करिबा एंड ए प्रोटीन सिंथेसिस कौन हुए ना मैम, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन नॉट द रेस्पिरेशन. क्लियर? सो माइटोकॉन्ड्रिया को हमें रिलेट करि परिबा की एटा कौन क्वेश्चन, एटा क्वेश्चन हो, एटा कौन. So mitochondria सहित relate करि परिबा कि that is the power house of the cell and this is also involved in the respiration. Clear? Very good. Next chloroplast केमिति होबा, that is the site of photosynthesis ना. chloroplast सहित तो गोटिए one and only process related, that is the photosynthesis. ताको अलगा सहित केमिति कनेक्ट करूछो. हां एरा सब बीडी क्वेश्चंस. चलो सो बीडी क्वेश्चंस आसिला. सो न्यूक्लियस मते को न्यूक्लियस रा काम कोन, दैट स्टोर्स द डीएनए दैट रेगुलेट्स द जीन. न्यूक्लियस रा काम कोन ना डीएनए को स्टोर करिकि रखिबो,
बीटी क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन किछि नै बायोलॉजी जोठी भी तमर आसीबो ए सब क्वेश्चन सेथिरे आसीबो दिस इज म आपन को यूनिवर्सल क्वेश्चंस गुडा ही आनी छी पूरा टिपिकल जदी आपन माने बीडी या फिर टीचिंग एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन पाइबे ना सेथि पई म आनीनी कारण मु जानि छी YouTube रे मिक्स वाला पिला देखंती ओके सो दिस इज आल्सो लाइक हमर कोन लाइक हेल्पफुल फॉर द टीचिंग एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स बट मोर ओवर एटा टोटल बायोलॉजी जो जो एग्जाम रे आसुची सबुथरे एटा क्वेश्चंस आसुची हैला So next मते को the breakdown of glucose is absence the breakdown of glucose in absence of oxygen is called जदि absence हैला oxygen absence रे किछि respiration होउची ताकू हमें anaerobic oxygen कहूचे जदि oxygen present रे किछि होउची ताकू aerobic कहूचे clear respiration केते टाइप रो ना मैम 2 टाइप रो फैंसी ओके सो रेस्पिरेशन केते टाइप रा ना 2 टाइप रा गोटे होची रे लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन आ गोटे होची एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक कोन ऑक्सीजन एब्सेंट हेले एनारोबिक प्रेजेंट रहिले एरोबिक क्लियर एतिक बुझी पारिलो वेरी गुड चला सो ये हमरा फोटोसिंथेसिस जानि छ ट्रांसपिरेशन भी जानि छ वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स नेक्स्ट को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन या भितरु प्लांट हार्मोन कोटा नुह मते कहिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन कौन हाउ ऑप्शंस ऑक्सिन जिबरेलिन इंसुलिन और साइटोकाइनिन व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑक्सिन तो हबनी कारण ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन जे कि कोथरे ना रेगुलेट करे सेल एलोंगेशन को ए जो हमर ऑक्सिन पाइन कोन ना सेल एलोंगेशन हुए इन द प्लांट्स सेल elongation हुए सो जिबरेलिन रा काम कोन कहि परिबा व्हाट इज द वर्क ऑफ जिबरेलिन दैट स्टिमुलेट्स द स्टेम elongation ये हमर सेल elongation करे ये हमर स्टेम elongation करे या सहित रिलेट करि परिबा ये कोथ पई ना स्टेम elongation तो इंसुलिन काम कोन ना मैम दिस इज अ हार्मोन जोटा कि एनिमल रे थाए सो इंसुलिन इज द एनिमल हार्मोन नॉट द प्लांट हार्मोन क्लियर साइटोकाइनिन त हमर से भी हमर सेल डिवीजन रे हेल्प करे साइटोकाइनिन कोन प्लांट सेल डिवीजन रे हेल्प करे आपण एग्जांपल नै परिबे कोन जीटिन इन द मेज जीटिन इन द मेज द एग्जांपल ऑफ साइटोकाइनिन फेस ओके चलो नेक्स्ट को द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर सीड जर्मिनेशन इज जो हार्मोन हमर सीड जर्मिनेशन रे हेल्प करे लाइक आपण माने त गछ को पोतंती माटी रे धीरे धीरे फास्ट जो जर्मिनेट हेगी गोटे रूट आसे ताकू हमें कौन कहूचे जोटा स्प्राउटिंग है कि हमें ऐसे मु कहे सेटा कौन कहूच ना मैम दैट इज द जिबरेलिन रिस्पांसिबल फॉर व्हाट इंसुलिन ओनली ह्यूमंस चैट इज लैगिंग ना तो राइट कौन हबो ना मैम जिबरेलिन कौन हबो जिबरेलिन हाँ कारण फास्ट इंसुलिन आपण मानकर घुसुरी ठु कलेक्ट करा जायथिला फास्ट इंसुलिन ई आग घुसुरी टू कलेक्ट करके रखा तो एमती केते संख्या रे घुसुरी को मारिक आमे माने इंसुलिन दिया होउतला ता परे पुनी इबोली ठु निया गला फास्ट घुसुरी टू आस्थिला हैला तो मते चलो तार स्टोरी गोटे डिफरेंट ता विषय रे पसिले त माने बाया हबो सो मते को ऑक्सिन कोन होची ना हेल्प इन सेल एलोंगेशन कहिथिली एब्सिसिक एसिड रो कोन काम रहयो मते को एब्सिसिक एसिड कोन करूची ना दैट इनहिबिट्स द जर्मिनेशन सो जर्मिनेशन प्रोसेस को इनहिबिट करूची किए ना एब्सिसिक एसिड देन साइटोकाइनिन को कोन कहूचे ना दैट प्रमोट्स द सेल डिवीजन जोडा के आपण माने को व्हीट केस रे कहिली राइट चलो नेक्स्ट The hormone responsible for dormancy in seed is अच्छा dormancy आसी जाए seed रे जोटा कि हार्मोन हमर responsible हुए रात्रि टाइम रे dormancy मीन रात्रि टाइम रे जो हमर respiration process होछ ताको हमें usually technical word रे dormancy कहूचे तो मते को the hormone responsible for dormancy in seed is what What will be the right answer? आपण लेट रे पढौचंती और आंसर अच्छा कोन हेछि आ देखिया पड़िबो ओ देखिया पड़िबो ताको तो ऑक्सिन त केबे होबनी साइटोकाइनिन तो होबनी abscisic acid that is the ABA that known as what na ABA is also known as the stress hormone स्ट्रेस हार्मोन कहा को हमें कहूचे ना मैम एब्सिसिक एसिड को हमें स्ट्रेस हार्मोन बोली भी कहूचे दैट इंक्लूड्स द डॉर्मेंसी क्लियर ना ना जिबरेलिन नहीं जिबरेलिन होची जस्ट ऑपोजिट एब्सिसिक एसिड रो ऑपोजिट होची जिबरेलिन नेक्स्ट द लॉस ऑफ वाटर
The loss of water in liquid form through hydrothores is called. The loss of water in liquid form through hydrothores is called what? Transpiration होची loss of water vapor, not the liquid. It is liquid पचारिची. So transpiration बिल्कुल कहबनी कारण transpiration होची loss of water vapor. So guttation कौन रहिबो? That is the secretion of liquid water at the leaf, that is in the margins. कौन? Leaf margins through water vapor liquid condition रे कौन? Example आपण माने नहीं परिबे. गार्डन में देखिछन्ती प्लांट्स माने शावरिंग करंती कौन? लाइक plants माने show करंती the droplets in the early morning. In the garden, the plants are showing in the droplets in the early morning. That is the perfect example of the guttation. Early morning रे जीव भारी automatically droplet बाहरुथुवा. That is what? Now the loss of water in the liquid form through the hydrothores. Hydrothores द्वारा ही कोन तार एजेस द्वारा आमे कहि परिबा the like कोन exactly गछ नाटा मने पड़ने तुमको कहया पई. Only winter वाला सीजन सहित रिलेट करबनी. होल द ईयर आपण माने मॉर्निंग रे जाई कि चेक करिवे गछ पाखरु पत्र पाखरु सब बेले आपनको वाटरी लागिवो. That is the guttation process. Evaporation, that is the physical process. Evaporation, physical process of water turning into the vapor, that is physical. Okay, very good. Osmosis hele kon कहूचे ना the movement of water through a semi-permeable membrane. The movement of water, that is what? Now, ma'am, movement of water through a semi-permeable membrane is called osmosis. Clear? Very good. चलो next मत देखो which process explains movement of water from high concentration to low concentration through a semi-permeable membrane. एबे ही कहितली मैम diffusion हेले कोन हबो ना movement of molecules without membrane restriction. जदि कहिबो without membrane restriction जदि हे गला, that is the diffusion. But एबे आपण मानु कोन कहली एबे जस्ट कोन कहली yes, that is the osmosis. Right answer कोन हो? Osmosis. Active transport हमें कहा कहूचे ना the movement of molecules against the concentration gradient. कोन जते बेले against the concentration gradient आसी जीवो movement हबो molecule मानकर ताकू हमें कोन कहूचे ना मैम active transport. That is against, that is what? Now against the concentration gradient. Clear? Is that clear? Very good. Already translocation janicho, that is the movement of food in the phloem. So phloem re amara kon food ra movement hue. That is the movement of food in phloem. In phloem is what? That is the translocation. Example आपण मान नहीं परिबे कि the sucrose transport in sugarcane. हमारा sugarcane मीठा आसे automatically नुआ because हमारा कौन sucrose जाए. So sucrose in the presence of sucrose, out of sucrose transport in the sugarcane, that is the example of translocation. Next मत को photoperiodism in plants refers to photoperiodism कथा कहला. तो photoperiodism in plants refers to what? देखो response to water एटा तो केबे हबनी कारण related to the कोन drought resistance. So ये हमरा drought condition को बुझौची. ओके मरुडी को बुझेई देला. So मते को response to light duration हबो कि नहीं? Yes ma'am, that response to the photoperiodism in plants refers to the light duration. कोन the flowering depends on the flowering कोन ना only day time रे ही हेई थाए. Is that clear? Clear? Very good. चलो मते को which pigment absorbs maximum light for photosynthesis? Actually तम मानकर मेसेज बहुत लेट रे आसुची बुझी पारुची ए रहिलो ना तो तम मानकर मेसेज ही लेट रे कोन पे आसुची वीडियो तो फर्स्ट अछि
रंजित सर वीडियो लैग हो कि लाइक किछि टाइम ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି। yes so next मते चलो which pigment absorbs maximum light for photosynthesis को pigment maximum light absorb करि परिबो chlorophyll A B xanthophyll और carotenoids देखो carotenoids कहि दे ऑलरेडी ऑरेंज कलर आसी जाए right so कौन हबो ना chlorophyll A will be the right answer कौन पाई ना this is the main photosynthetic pigment बोली हमें ता कहूचे that is absorb the red or blue light example आपण माने कोन नै परिबे the जत्ते green plants अछि that is present in all the green plants chlorophyll B कौन रहिबो ना accessory pigment of that chlorophyll A that transports the energy to the chlorophyll A. This is the accessory pigment बोली हमें ताकू कहूचे xanthophyll को कौन कहूचे ना that is the yellow pigment carotenoid that is the orange pigment एतिक जानि परलो चलो next मते को in which process is Rubisco enzyme involved को प्रोसेस रे हमर कहिलो Rubisco enzyme involved थाए ग्लाइकोलिसिस रे त केबे होबनी because glucose breakdown हुए in the cytoplasm that is the glycolysis then Krebs cycle that is related with the mitochondria so Kelvin cycle कौन हबो ना right answer will be the Kelvin cycle clear so Rubisco fixes the carbon dioxide with the कौन ना ma'am Rubisco clear that is the Rubisco enzyme next so Kranz anatomy is a feature of मते कहला Kranz anatomy कहार feature रहिबो Kranz anatomy is a feature of what ना मैम C4 plants that is what ना मैम C4 plants C3 plants हेले that is wheat रो example नहीं परिबो C4 plant हेले maize रो example नबो cam हेले that is the adaptation to desert condition जेते cactus plant आसिला ताको आपण माने cam रे नै परिबे hydrophytes हेले hydrophytes aquatic plants that is कोन lotus आइ जिवो example hydrophytes रे आपण माने कोन lotus रे example नै परिबे right चलो नेक्स्ट मते कुआ which factor is most important for opening of stomata अच्छा stomata रो opening पई कोटा most important factor मते कहिलो ना मैम that is the potassium ion concentration but ना potassium ion concentration एतिक मन रहिबो एतिक मन रहिबो Kranz anatomy पई कोटा रिक्वायर हुए ना potassium ion concentration that कोन हुए ना influx makes the guard cell turgid next कुआ nodules in leguminous plants are formed due to nodules कोथि पई leguminous plant रे हमरो तयारी हुए मते कहिलो are formed due to ना मैम bacteria कोथि पई ना rhizobium the bacteria like that is the rhizobium okay so the rhizobium forms the nitrogen fixation or the nitrogen fixing nodules example आपण माने pea plants नहीं परिबे the pea or any kind of bean plants pea or bean plants को आपण माने example नहीं परिबे तो मते को फंजी को रिलेट करि परिबा की फंजी को रिलेट करि परिबा no ma'am that is from the कोन mycorrhiza algae that is fix nitrogen in the symbiosis यदि symbiosis कथा पचारि थांता ताहाले आपण माने कहा सहित रिलेट करि थांते ना मैम algae सहित क्लियर चलो नेक्स्ट which form of nitrogen is absorbed by plants मते कहिलो nitrogen absorb करे plant रे that is which form of nitrogen is absorbed by plants that is कोन nitrogen in the form of ammonia so हमें कहि परिबा कि NH4 plus and NO3 that is ascorbic acid that is what absorbic ionic form ताको हमें कोन कहू जे that is the absorbic ionic form example नहीं परिबा that is the fertilizer supply the nitrate and the ammonia clear very good चलो next को the universal hydrogen acceptor in respiration जेमिति आपण माने जानि सुंदी blood group रे थाए universal acceptor or universal donor सेमिति मते को the universal hydrogen acceptor in respiration कोन थाए ना मैम NAD plus कौन थाए ना NAD plus or NADH or H plus to form the NADH accept the electrons and H plus कौन करे H plus to form the NADH example आपण माने glycolysis and Krebs cycle नै परिबे कारो ना glycolysis and
क्रेब्स साइकिल ओके एतिक रिलेट करि परिबो FAD हेले कोन हबो ना दैट इज आल्सो an acceptor FAD only acceptor but less universal than the NAD plus okay ATP हेले कोन हबो ना that is the energy currency ATP हेले that the precursor or like ATP रो precursor आमे कहा को नै परिबा ना मैम ADP को ओके ATP रो precursor किए ना ADP clear so this was all about the today session again आपण मानु कहूची बैच स्टार्ट हे सारी लानी सीबीजेड क्लास ऑलरेडी चली लानी ए आपण को जूलॉजी क्लास चली छि तापर बॉटनी चलीबो सो 2499 रहूची बैच रो प्राइस माने महापैक रो प्राइस सो 1.5 ईयर भीतर जेते वन डे एग्जामिनेशन आसुची आपण माने इथरे एनरोल करि परिबे और 26 27 एंड 28 तीन दिन ऑफर थिला 27 जे ऑलरेडी सरी लानी आज लास्ट डे अछि जे कोनोसी लाइक बैच आपण एनरोल करबा को चाहउसंती जल्दी जल्दी बैच को एनरोल कर ठीक है so this is all about today's session thank you guys again देखा हबो पुनी गोटे सेशन रे thank you so much any queries अछि then do let me know आसी जा नई की कोन जा सॉरी नहीं बट जा तू जा क्लास टिके करिया को आस मैडम सुंदर कि असुंदर देखिया को थोड़ी ना आसीबो हां किरा कहूच तमे सब किछि बुझी नाही परबार ओके चलो bye bye take care of yourself take care of your parents first this would be your first priority no one else in the world thank you bye bye I think I am the only one typing na re achanti 7 mate show karuchanti baki kuade gale don't know bye bye take care